Good evening all. Am I audible? କହିବେ କି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି କି WhatsApp ରେ? Geography optional ପାଇଁ ଅଲଗା group. Actually ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୁଝି କହିବି। सर नमस्कार। नमस्कार କୁହନ୍ତୁ। सर काली एक्चुअली सर जो लिंक देथिले हम तो जॉइन हे पालेनी आ सर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं। काली कोन डिस्कशन हेतले टे कहबे की? काली कौन डिस्कस करथिले हमें? एनर्जी क्राइसिस। सर हम रिकॉर्डिंग टा पाई परिबो की? तो रेकॉर्डिंग टा सी आपण कांटेक्ट करलो पूजा को, जदी सी ही दे परि। एक्चुअली एक्सेस टू रिकॉर्डिंग इवन मो पाखे भी नहीं। मु जो रेकॉर्ड करूची एटा माने कलिंगर डेटाबेस को जाउची, तो केमती कोन एक्सेस दोचन सेटा मो पाखे भी नहीं। ओके सर। सर एक्चुअली आ गोटे थिला सर जो सर सिलेबस एनालिसिस सर का आपण कर देचंती? हां करथिली, काली गत काली करथिले स्टार्ट सेट को। ओके सर। ओके सर जेहेतु एटा पेड कोर्स अछि मु किनिनी पर्यंत, तेनु काली रो एटा हमें पीडीएफ टा पाइनी। सर काइंडली आउ थरे टिके रिव्यू कर दे की पढाइबे की? टिके गोटे माने 5 मिनिट पय जस्ट टिके रिव्यू। ओके चिन्मय क्लास रे छ की? यस सर। ओके केमती गला एग्जाम? सर चलिए सर। सर पेपर टू हार्ड है हला। ए कोन हार्ड हला हो? माने एमती कोन थिला जेटा की बहुत हार्ड गेला कहले? सर माने सर अदर पार्ट उडा ठीक है सर, मैपिंग उडा सर डीप पड़ी गला। मैपिंग केतरा ठीक होची? 5 टा सर 4 टा मात्र ठीक होची। एते भी डिफिकल्ट नथला। हो ठीक अछि, किछ असुविधा नहीं। हो 4 टा ठीक होची तो? सर सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। केमती गला? सर ज्योग्राफी को जते एक्सपेक्टेशन रखि दिलु से अनुसार से माने पेपर 1 टा ठीक ठाक जाई छै, पेपर 2 टा टिके माने मैपिंग सर मोर जहा 6 टा ठीक अछि आ पेपर 1 में सर गोटे 6 टा तो बहुत हलान। माने डिफिकल्टी लेवल बेसिस रे जे 6 टा बाजु छै बहुत हलान। जिनमें 4 टा भी जदी बाजु छै एते खराब न हो, माने जदी बाकी क्वेश्चन जदी ठीक से अटेम्प्ट करिछो, बिकॉज़ टिके एनालिटिकल क्वेश्चन थिला। जदी तमे माने ठीक भाबे एनालाइज करी के जदी करिछो, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। सर मैपिंग में जीएस टाइप रो आंसर उरा हे। हां किछ असुविधा नहीं, बट सिंपल कथा माने जे ठीक भाबे एनालाइज करी के जदी क्वेश्चन को लिखिछो, माने सी एमती भी आउट ऑफ द बॉक्स नथिला क्वेश्चन। तो माने बुझी परछो ना, माने सिंपल कथा होची डायरेक्ट हेडिंग जेमते पेपर 1 रे कोन करथले कि डायरेक्ट हेडिंग रू उठी के दे दी छी क्वेश्चन ता, तो सेहीटा न देखि कोन टिके ट्विस्ट करी के करे। ए जदी एनी टाइम हमें ज्योग्राफी आ गोटे पचरे वाला थिला सर, पेपर 1 रे गोटे मैपिंग आसीतला ग्रीनविच। तो सर सेटा मु वाला ग्रीनविच लाइन ड्रा करि छी, तो सर सेटा एक्चुअली ग्रीनविच रो सिटी पचरे छी या लाइन? हां ग्रीनविच रो प्लेस ता पचतला, बट ग्रीनविच लाइन भी करजो मे बी ठीक अछि। एते माने मे बी तमे फुल न पाई परो, माने 6 आउट ऑफ 6, बट इट्स नॉट लाइक यू आर गेटिंग 0। मे बी माने इन बिटवीन तमे मिल बट से तो सिटी भी तो सर मेंशन करेनी, खाली ग्रीनविच लेखि के छाड़ दे। तो ग्रीनविच लाइन को भी हमें ग्रीनविच कहू और से सिटी को भी नो डाउट ग्रीनविच कहंदी। तो सर एमती रे केमती कंसीडर करू? ना किछि प्रॉब्लम नै। देखो एटा तो रहिला एग्जामिनर ऊपर को, काहे कि ओपीएससी जो आंसर तार गोटे ब्लू माने तांकर जो से माने गोटे तांको गोटे मॉडल आंसर गोटे देबे तांको ब्लूप्रिंट गोटे, तो ता ऊपर डिपेंड करूची जे से कोन कंसीडर करची ओपीएससी। बट इवन जदी से ग्रीनविच सिटी को भी जदी करे, जदी ग्रीनविच लाइन भी करछन, देन ऑब्वियसली यू आर गेटिंग समथिंग। सर आ गोटे कथा, जेतु हमर ज्योग्राफी टिके माने अलगा ऑप्शनल अपेक्षा टिके डाउन जाइछ, माने माने एवरेज पाए गेल समस्तंकर। तो सर सेटा ओपीएससी किछि कंसीडर करे कि ओवरऑल ऑप्शनल कंसीडर सेमती एज सच करे नी, किंतु एटा तो सब बळे देखि छी कि जेहेतु ज्योग्राफी रो पेपर 2 माने इवन 2019 रो देखंतु 2020 रो देखंतु, तो सब बळे टिके डिफिकल्ट लेवल अछि। इवन 2018 रो तो कहिबी नि, 2018 रो इजी थिला, 2017 रो डिफिकल्ट थिला। तो सब बळे कोन दे कि पेपर 2 टा जो माने अटेम्प्ट करंती माने ठीक वे रे, obviously analytical question ହେଇଛି ମାନେ to the pinpoint attempt ତ ହବନି, but it's not like ki beating around the bush। ଯଦି ଠିକ ଲାଇନ ରେ ଯଦି you have written the answers, you are getting marks। तो जदी
माने मु एक्सपेक्ट करू जे ऑब्वियसली समस्त हम क्लास रे सब टॉपिक डिस्कस करी जे जो भी जिंस लिखिथिबे सपोज ग्रीन रेवोल्यूशन रो तो इट्स नॉट लाइक कि हां एकदम बाहर लिखिथिबे तो निश्चय भाबरे ठीक ही लिखिथिबे आई एक्सपेक्ट तो यू आर गेटिंग गुड मार्क्स आ छटा विषय त ठीक है माने बहुत भलो है कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल सर सब पेपर भलो है खाली पेपर 2 टा टिके माने नहीं, आउट ठीक माने अच्छे। ज्योग्राफी को लेके नॉर्मली एक्सपेक्टेशन अधिक था जे तो हाँ, मैपिंग हाँ, वगैरह निश्चित अछि भाବରେ, तो से but- जिंसरा टिके बट ठीक ये- अछि जेतोल पेपर डिफिकल्टी लेवल टिके हाई ही जाउची सेमानकर मार्किंग टा भी टिके माने टिके लिबरल रखंत सेमान अनलेस अंटिल सर बेसिक मो सेटा पचारुतली कि जंती यूपीएससी रे जदी ऑप्शनल पेपर को माने टिके ये करंते से माने समथिंग किछटा मार्किंग रा एवरेज ओटे पकांती हाँ, माने सब एबी ऑप्शनल पेपर को एबी consider ओपीएससी करिକି। करूची ना सेमती एबी ओपीएससी करूची स्केलिंग करूची ओपीएससी तो सेटा सर ए वर्ष हमर ज्योग्राफी पई हमें टिके बेनिफिट पाई परबो हाँ हाँ आशा करि परिबे मिल पारे माने जे डिफिकल्टी लेवल जेतोले थाए तेतोले आपण ए सेम आंसर जदी गोटे स्टैंडर्ड पेपर रे पढतान जदी इफ यू आर गेटिंग अराउंड 160 170 देन मे बी सेम डिफिकल्टी लेवल रे आपण 190 प्लस भी आपण एक्सपेक्ट करते 20 मार्क रो बफर आसीबो सर आउटे लास्ट क्वेश्चन सर हाँ। आपण सब जाक क्वेश्चंस तो देखिले माने एसए टू नै कि हाँ, जीएस हाँ। तो आपनकर सर फीडबैक कोन है वर्षर कट ऑफ आर वर्ष टाइप रो लास्ट ईयर टाइप रो जिबो ऑलमोस्ट सेम ही रहबो ऑलमोस्ट सेम रहबो बिकॉज़ स्केलिंग करिया स्टार्ट कर देछि ओपीसी तो सेई जो मार्किंग गुडा को सेई रेंज रे ही रहउछि जीएस पेपर माने कंपैरेटिवली लास्ट ईयर कंपैरिजन रे इजी अछि रीजन दीटा काहे लास्ट ईयर ऑलरेडी पैटर्न आस जाइथिला तो माने ऑन एंड अराउंड एक्सपेक्टेशन रो सहित आछि माने बहुत डिफिकल्ट लेवल रो जीएस आसी नाही फ्रैंकली स्पीकिंग आउ हां एसए पेपर ऑब्वियसली डिफिकल्ट थिला एसए रे सेमती मार्क्स आसे नाही बहुत अधिक माने ऑन एंड अराउंड 100 120 सेटा रेंज वेरी करे माने गुड स्कोर माने जो रैंक होल्डिंग स्कोर्स रे कहूची तो सही एक्सपेक्टेशन सही कट ऑफ अराउंड ही रहिबो एक्सपेक्टेड ओके सर थैंक यू ठीक है थैंक यू Thank you, ओके विल बिगिन विद द क्लास हेलो सर हां चिन्ह हां और ये ज्योति कुंज सर एक्चुअली कालिर जो पीडीएफ टा सेटा कोठो पाइबे एक्सेस कर परिबे सेटा तो आई थिंक से कोन गूगल ड्राइव वगैरह करके सेटो एक्सेस करंती ना आपण कहले शेयर करिवे बिली किंतु शेयर करनान तो मु सेता मु शेयर देखो मु कोन ना मु शेयर कर दिए मु जो भी मटेरियल बा जाबे माने देखते मु तो ग्रुप रे नहीं तो मु जनरली शेयर करते पूजा को तो पूजा फर्दर माने ड्राइव रे अपलोड करंती सेई जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ता सेटा तांको काम तो ओहो ठीक अछि ओके ग्रुप रे आसी सर पीडीएफ हां ओके ओके ठीक अछि देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास ठीक अछि यस सर विषय चिन्मय आपण इस रिपीटेटिव क्लास सर टिके सर लास्ट क्वेश्चन गोटे पचारतला सर जे जो पेपर 2 रे भरकाली क्लिप पचारितला सर सेटा एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक अछि तो सेटा को से माने कोन माने गेस मार्क जो हमरो एक्स्ट्रा मार्क मिले ना सर ताको अलग किछ समान कंसीडर करे नहीं स्पेलिंग मिस्टेक थिला ना बहुत समय स्पेलिंग मिस्टेक थाए मैपिंग क्वेश्चन रे तो सही करेक्ट स्पेलिंग ता माने सेमती करंती से माने से माने एज्यूम करंती आपण से करेक्ट स्पेलिंग अनुसार आपण करी कोइ की सेइडार ग्रेस करंती से माने that is the sad part of OPSC you have to consider it okay ठीक है we'll begin with the class विश्लेषण आउ चिन्मय यदि माने आपण काहे कि रिपीटेटिव करिवे you can invest your time in a better way ठीक है yes sir thank you sir okay thank you सर टिके क्वेश्चन देखेबे की कौन देखिबे पहले क्वेश्चन हां सर माने ए जो लास्ट ईयर माने ए थरो जो क्वेश्चन बी जो सल्ला सर ओके ठीक अछि जस्ट 1 सेकंड ठीक है स्क्रीन विजिबल अछि यस सर यस सर तो काली जहां डिस्कस करथले एई गुडा पासथिला आपनकर माने पेपर 1 तो इजी थिला माने जो से एक पचाउथले मते विश्व जो ग्रीनविच कथा पचाउथले तो से ग्रीनविच लाइन और ग्रीनविच सिटी को पचाछि सी एमडी भूल हुए माने सिंपल कथा माने दिस यू हैव टू प्रेरिस पड़ी ची पंपास एई गुडा तो प्रेरिस पंपास जो ग्रासलैंड
yes, very is grassland. ठीक अछि तो एटा तो पेपर 1 तो माने क्वाइट डायरेक्ट थिला पेपर 1 जहा माने टिके माने डिफिकल्ट थिला यू कैन से पेपर 2 रादर सर टिके खाली इंटरप्ट करबा चाहिए हां कोंतु सर काली जो सोर्सेस विषय आपण काली कह दिजंती को सोर्सेस विषय पहले बुक्स मैं ज्योग्राफी रो यस सर बुक्स ओके आउथर कहली बुक्स तो ऑब्वियसली कहिनी मे बी ओरिएंटेशन क्लास के कहितली जदी इफ यू रियली वांट टू फॉलो सर्टेन बुक्स तो देखंतो सविंदर सिंह पेपर 1 रो जो पार्ट ए रहिला ता पई सफिशिएंट ओके माने ए पार्ट ता पई आपन को सविंदर सिंह विल हेल्प यू आउ जदी जियोमॉर्फोलॉजी रो जो आपन को ए जो पार्ट गुडा रहिला लैंडफॉर्म्स रहिला आपई इधर आपन यू कैन फॉलो एनी ऑनलाइन सोर्सेस जेमते कि पीएमपीएस वगैरह दे हैव गिवन एक्सटेंसिव राइटिंग आउ जदी नाही निज तरफ किछि स्टैंडर्ड बुक्स पढिबार जदी आपन को भलो लागे इंटरेस्ट अछि देन यू कैन गो फॉर सेटा कोन बहिटा जो जिसिलियम सर yes that is जिसिलियम okay so remaining apart from that remaining parts it can easily be covered from Savinder Singh रहिला जो environmental geography टा obviously it expect माने आपन को किछि निजर ओन इनपुट एक्सपेक्ट करछि जोटा कि आपन रादर इंटरनेट सोर्सेस टू बेटर मिल परियो ठीक अछि even in our class we are going to deal with this particular chapter quite extensively okay so किछि प्रॉब्लम होनी माने मु एडु मो निजे नोट्स नु ही पढी दे जनरली okay coming to part B जोटा रहला हमर ह्यूमन ज्योग्राफी तो ह्यूमन ज्योग्राफी रा सिंपली कहौ तले कोनोसी एज सच बुक नाही जोटा कि कंप्लीटली कवर करछि इंटरनेट सोर्सेस ऊपर रादर अधिक रिलाय करते हेलो हां कोन सर ह्यूमन ज्योग्राफी सर माजिद हुसैन रो गोटे सर बुक अछि से सर टिके इफेक्ट होबो जस्ट मु कहबे चाहथि से कथा नाही तो एमती कोनोसी बुक नाही जोटा कि आपन को एक्सटेंसिवली पूरा सिलेबस कवर करि दोछि ह्यूमन ज्योग्राफी रा बट माजिद हुसैन रो ह्यूमन ज्योग्राफी गोटे बुक अछि सेटा फॉलो करि परे बट मु माने ऑन ग्राउंड रियलिटी इट कवर्स हार्डली 30 to 40% ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सिलेबस अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच किछि जेंति बुक्स नाही बहुत ही बुक्स बहुत गुडे रिसोर्सेस को फॉलो कले ये सब माने कंप्लीट हे पर अदर आपण जो भी हमें आपण को रिसोर्सेस देबी बा इंटरनेट जो रिसोर्सेस गुडा को अछि दैट यू कैन फॉलो इट विल गिव यू बेटर कॉस्ट बेनिफिट ओके तापर रहिला होची आपनकर पेपर 2 रो जो रहिला इंडियन ज्योग्राफी विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा आर बेस्ट वे होची जो हमरो इंडियन ज्योग्राफी रो जो बुक अछि माजिद हुसैन रो दैट इज सफिशिएंट ताकू छाडला परे जो रहिला किछि स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा में कहूछु ओडिशा रो ज्योग्राफी रो किछि बुक्स अछि बट जेमति कि कोन जीसी रॉय गोटे अछि आ सम सिन्हा गोटे बुक अछि किंतु ए बुक रे सेंती नै अपन बहुत जे पढा दरकार नै जे कोनोसी भी टॉपिक जेतले पढिबे obviously you just try to relate that thing with respect to Odisha okay तो आपई सब बेस्ट वे होची इंटरनेट सोर्सेस जदी जेमति कि किछि ताकू छडला पर जेमति फिजिकल एस्पेक्ट एसु जिंस छाडंतु जेमति सपोज बे एग्रीकल्चर पढिलु जदी सपोज किछि गोटे पर्टिकुलर टॉपिक रो गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो जो साइट को जदी जिबे ना ताको और बेटर आपन मिले जेमति इंडस्ट्रीज हला तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऊपर रहिछि माने पांचटा क्लस्टर अछि एगुडा को सेही डिपार्टमेंटल जो साइट अछि डिपार्टमेंट्स रो सी बेटर आपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड को जे ताको जदी आपन जॉट कर देबे गोटे पर्टिकुलर नोट रे जोटा कि आपन को इजीली रिलेट कर परे से पर्टिकुलर टॉपिक सहित बिकॉज़ सी जदी जे कोनस भी गोटे माने सपोज एबे गोटे एड आसीला गोटे क्वेश्चन म आपन कहूची देयर इज ए व्हाट इज दिस हां सपोज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन तो ए जिनसटा जदी आसीला तो obviously expectation suppose it is a 60 marker question obviously there is less probability जे 60 marker रे आसीबो जदी आसुची देन फास्ट अपन तो बहुत गुडे पार्ट तो लिखिया पड़ियो जनरलाइजेशन माने नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओडिसा व्हाट इज इंडस्ट्री व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स व्हाट इज इंडस्ट्रियल माने इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन सामे ताको केमती करछु ता परे यू शुड गिव ए रेफरेंस ऑफ ओडिसा ओके माने ओडिसा रो इंडस्ट्रीज माने ओरिजिन केमती हला को टाइप रो इंडस्ट्रीज देखाउ जे को टाइप रो तार डिस्ट्रीब्यूशंस अछि ओडिसा रो गोटे दिटा मैप आपण इंट्रोड्यूस कर देले सेही आपण ताको माने डिपिक्ट कर देले को रीजंस गुडा को टाइप रो इंडस्ट्री डोमिनेट करछि दैट विल गिव यू माने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग ओके सो दैट इज द वे ऑफ माने कवरिंग दिस सिलेबस as per the examination is concerned okay so resources is this much ठीक है If it is done, we will go to the topic.
तो एनर्जी क्राइसिस हमें गतकाली कंप्लीट करथले we are going to start with the limits to growth. Okay, so limits to growth ro probability कम अछि, but as it is a new pattern of question, we are expecting new patterns of question. Again, this same question can appear, maybe 20 marker रे, 10 marker रे, 15 marker, the marker can be anything. Thank you, it already asked it limits to growth a was the question. Okay, let's wind up. So this is limits to growth. प्रथमे मु कहि दोची limits to growth कोन कहूची, what is the brief of this concept. तो brief कोन कहूची, see जदि हमें जो हमरो माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हला, फूड प्रोडक्शन हला, पॉपुलेशन हला किमा पॉल्यूशन हला, डिफरेंट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स अछि, जदि आपको हमें इन माने जो करंट रेट ऑफ इंक्रीज अछि, जदि ताकू सही हिसाब रे जदि इट विल गो इंक्रीजिंग लाइक द सेम पेस, जो रेट रे इंक्रीज कर सही रेट रे इंक्रीज होबस, जदि इट विल कंटिन्यू लाइक दैट, ए पॉइंट विल कम, गोटे पॉइंट आसीबो जो पॉइंट रे रिसोर्सेस गुडा को डिप्लीट हे जिवो, माने इनपुट्स आउट मिलिबो नाही, ता फल रे ए जो आउटपुट गुडा को अछि, वी कैन सी इट विल फॉल ड्रास्टिकली, गोटे पॉइंट आसे जो पॉइंट रे देयर विल बी अ ड्रास्टिक फॉल इन द आउटपुट बिकॉज़ द इनपुट्स आर डिप्लीटेड. तो सिंपल जिंस एति की ही ये कहिया को चाहू छी लिमिट्स टू ग्रोथ. तो ग्रोथ रो गोटे लिमिट अछि, इट इज नॉट infinite growth. Okay, this growth is limited by some boundaries. Within the boundary only this growth can happen. Okay, this is the crux of this concept jaha ku neki ame we are going to study how this concept was mane ei concept ta kemti put forth kara hechi to satisfy this particular conclusion. Okay, so we are going to deal with that. कौन हेतला माने माने प्रीफेस जदि देखिबा हाउ द कांसेप्ट केम इनटू पिक्चर. 1968 रे गोटे 75% माने मिसिकी गोटे ग्रुप करछन, से 75% जो थिले डिफरेंट स्टेटा, डिफरेंट माने पार्ट ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट फील्ड को बिलोंग करथिले, के मैथमेटिशियंस थिले, के इकोनॉमिस्ट थिले, के फिलोसोफर थिले, के किछि भी थिले. सो दे केम इनटू अंडर ए सिंगल ग्रुप एंड दे फॉर्मड ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड क्लब ऑफ रोम. ओके, तो ए क्लब ऑफ रोम कौन कला, से किछि रिपोर्ट्स बाहर कला. तो फर्स्ट रिपोर्ट जो बाहर करतला से, तो से अंडर द थीम को गोटे थीम रे बाहर कला, तार ना देतला से द प्रीडिकामेंट ऑफ मैनकाइंड. से केबे बाहर करतला 1970 रे फर्स्ट टाइम बाहर करतला. ओके, से एटा काहे की हेतिला, बिकॉज़ ए जो जिंसडा हम कहली जे जो जदी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जदी हबो, जो गोटे टाइप रो कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन देखा को मिलिबो, बहुत उडे जो हमरो इकोनॉमिक लॉस हबो, लाइफ लॉस हबो, से गुडा को प्रिवेंट करिया पय, से गुडा को अवॉइड करिया पय what should be the cautious step should be taken by the government, individual NGOs. तो ताको गोटे क्वेश्चन दवा पय ए टोटल रिपोर्ट टा एनालिसिस टा हेथि. ओके, तो क्लब ऑफ रोम फॉर्मेशन हला 1968 रे. 1970 रे गोटे इनिशियल से माने गोटे थीम अंडर रे रिपोर्ट पब्लिश करथले, जा ना थला द प्रीडिकामेंट ऑफ मैनकाइंड. प्रीडिकामेंट रो अर्थ ही होची गोटे अनवांटेड सिचुएशन जाको अवॉइड करिया पय व्हाट आर द स्टेप्स इट शुड बी टेकन. तो नेक्स्ट कौन हला एमआईटी चार जण रिसर्चर. ओके, तो सही माने दैट से जो टीम टाको दैट वाज लेड बाय डोनाल्ड मेडाउ. से कौन करथले आउ गोटे रिपोर्ट पब्लिश करले जहाकू हमें फाइनली कहूछु लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 रे. तो टोटल जदी क्रोनोलॉजी देखियो 1968 रे क्लब ऑफ रोम फॉर्मेशन हला. 75% फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी रु नेकी से माने इनिशियली गोटे थीम को अंडर द थीम दे हैव published their report that was the predicament of mankind 1970 रे. और finally 1972 रे चारि जन रिसर्चर from the MIT under the leadership of Donald Meadow they published this limits to growth. Okay, और ये जो रिपोर्ट टा पब्लिश कराउ छै, नो डाउट दे आर द रिसर्चर. तो रिसर्चर मानो कि गोटे फंडिंग करे, फाइनेंशियल सपोर्ट दिए, सो दैट वाज गिवन बाय द क्लब ऑफ रोम. ओके, so this is the thing. ए जेतोले रिपोर्ट आसिला 1972 रे, in the due course of 20 years 1972 to 1992 पर्यंत there was lot of criticism. ए रिपोर्ट रे बहुत गुडे क्रिटिसिज्म समान देखिया को पाइले. ता फल रे से माने निज रिपोर्ट को ही they have amended, they have molded their report. से माने जो लिमिट्स टू ग्रोथ थिला ता हेडिंग को बॉन्ड माने चेंज करी they have given one another heading that is called beyond the limits. ओके, तो एडा केमिति हला, ए जो क्लब ऑफ रोम जो माने डोनाल्ड मेडाउ जो रिसर्च करे के जो पेपर पब्लिश कले लिमिट्स टू ग्रोथ, सेति पे किछि गोटे माने किछि गोटे रेफरेंस से नै थिबे, जो रेफरेंस को नै कि से ए सब रिसर्च करथिले. से रेफरेंस थिला कोन
सिस्टम डायनामिक्स से ता पूर्व जने माने स्कॉलर थिले से होचंदे जे फोस्टर तांको गोटे बुक थिला से बुक रो ना होची वर्ल्ड डायनामिक्स से बुक वर्ल्ड डायनामिक्स भितरे से गोटे माने गोटे गोटे वर्ड को यूज करथिले सेटा होची सिस्टम डायनामिक्स वर्ल्ड डायनामिक्स होची बुक रो ना से भितरे गोटे गोटे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को सी यूज करथिले जोटा होची सिस्टम डायनामिक्स एटा को रेफरेंस रे रखी कि ए एमआईटी रो प्रोफेसर साइंटिस्ट माने एक लिमिट्स टू ग्रोथ को पब्लिश करथिले ओके तो जो आमे जो पढुचे जो देखिले जो रेफरेंस ता रहिला सिस्टम डायनामिक्स तो सिस्टम डायनामिक्स अंडर रे कोन जिंस थिला से कोन कहूतिले ठीक पांचटा पैरामीटर अछि ओके देयर आर 5 पैरामीटर सेटा को इंटर रिलेटेड माने इंटर डिपेंडेंट पैरामीटर तार वेरिएशन हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से पांचटा पैरामीटर कोन गोटे होची पॉपुलेशन गोटे होची फूड प्रोडक्शन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस और फाइनली होची पॉल्यूशन ये पांचटा पैरामीटर जणे आउजन को ऊपर डिपेंडेंट ओके दे आर इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशन माने हमें सिना गोटे गोटे को कंसीडर करले इट इज वेरी इजी टू एनालाइज बट व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द 5 पैरामीटर्स एट ए टाइम इट विल बी ए वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन ओके तो जेहेतु एटा गोटे बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन ताकू माने आमे माने एज ए ह्यूमन माने आमो ब्रेन एट ए टाइम प्रोसेस करे इट्स वेरी डिफिकल्ट तो सेठी पे से माने कोन करथले एटा गोटे कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज करथले कंप्यूटर सिमुलेशन रो अर्थ बुझुचंती गोटे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइप जिंस जोटी किछि इनपुट्स बतेले कंप्यूटर निजे प्रोसेस करी के आउटपुट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्मेट रे डिफरेंट आउटपुट्स रे डिफरेंट डेटा रे से शो करिवो ओके सो एटा होची टोटल कांसेप्ट ऑफ योर माने लिमिट्स टू ग्रोथ तो लिमिट्स टू ग्रोथ रे कहैतला पांचटा पैरामीटर जोटा कि माने जे फोस्टर थिले देथिले अंडर द हेडिंग ऑफ वर्ल्ड डायनामिक्स बुक डायनामिक्स देथिले तार एनालिसिस तार जो कहूची मु कंप्यूटर सिमुलेशन ता सेही रिपोर्ट टाकू ही आमे कहूछु लिमिट्स टू ग्रोथ ओके तो जनरली कोन हुए जति माने इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दी प्रकार ऑफ फीडबैक चले दी प्रकार ऑफ फीडबैक लूप अछि ए सब पैरामीटर जो कहली पांचटा पैरामीटर 1 टू पैरामीटर 5 these 5 parameters are interdependent प्रथम कहली interdependent केमिति होची because they are running in a feedback loop एमती टाइप ऑफ फीडबैक लूप रे काम करे व्हाट इज फीडबैक लूप जदी एडी किछि मु इनपुट देली एटा गोटे किछि प्रोसेसिंग सिस्टम माने किछि गोटे हम एनवायरनमेंट अछि इकोसिस्टम अछि से इनपुट फल रे किछि आउटपुट आसीबो ओके जेमति कि मु कहिबी कि फूड बर्तमान is food production is increased जेतु food production suppose increase हल्ला तो availability of food बढ़िबो तो availability of food बढ़िया फल रे मे बी population increase हे पारे ओके this may be one possibility तो ए टाइप रो जो गोटे इनपुट रे गोटे आउटपुट आसुची ना तो दैट इज कॉल्ड ए नॉर्मल सिस्टम किंतु ए पॉपुलेशन बढ़िबा फल रे तार इंपैक्ट आउट रे फूड प्रोडक्शन ऊपर पड़िबो so that is called a feedback loop okay तो feedback loop टा जो अछि ताको दी प्रकार हे परे either it is positive or it is negative positive रो अर्थ कोन ए जो feedback हबा फल रे इनपुट रे जदी पॉजिटिव इंपैक्ट पडुची जदी आप पॉपुलेशन इंक्रीज होआ फल रे जो फीडबैक ता हबो ता फल जदी फूड इटसेल्फ आउट रे बढ़ुची इट इज पॉजिटिव फीडबैक जदी पॉपुलेशन इंक्रीज होआ फल रे जो फीडबैक पड़िबो फूड प्रोडक्शन ऊपर जदी साकू डिक्लाइन करूची नेगेटिव होउची इज नेगेटिव Yes, sir. okay that is what is written over here among various relationships there are feedback loops that is running then we coach population growth is positively related to the food production because food production बढ़िला population बढ़िबो बट जदि हमें फूड प्रोडक्शन कथा देखिबा ये नेगेटिवली इंपैक्ट कोची पॉल्यूशन ऊपर माने पॉल्यूशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कोची जदि पॉल्यूशन बढ़ी गला then obviously से एरिया रे फूड प्रोडक्शन ता कमी जिवो so that is a negative relation तो नेगेटिव फीडबैक पडुची ता ऊपर ओके दिस इज द मॉडल तो ए किछि भी जतोला हमें मॉडल पढिबा रिमेंबर वन थिंग सेही सब मॉडल दबा पूर्व ना किछि अजम्पशंस थाए कि ए जिंस गुडा को हमें कांस्टेंट रखिले बा ए जिंस हैपनिंग हो जेरा मानि की चलले से गोटे आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जते पर्यंत तैयारी करा हैनी सेते पर्यंत से सिस्टम ता बा से मॉडल ता सेठी सैटिस्फाई करिवो नाही तो फॉर एनी मॉडल यू विल फाइंड सम assumptions will be there तो कमिंग टू द assumptions of limits to growth फर्स्ट जिंस होची पॉपुलेशन इंक्रीज तो पॉपुलेशन इंक्रीज अर्थ कोन सिंपल कथा कहले इट्स
difference between the birth rate and the death rate. Okay, that's it. Auri bhi achi in in migration, out migration, but considering very simple, birth rate out death rate को minus कले हमें population increase देखुचु, तो population increase चारटा factor ऊपर depend कुछ कौन कौन गोटे होची crowding, food intake, pollution, and next होची material standard. Okay, माने standard of living जो कुछ ए चारटा ऊपर माने से डिपेंड कुछ से कहबारे जदी ए भितर किछि भी माने ए राइज इन एनी ऑफ द फोर फैक्टर ए जो चारटा भितर जदी किछि भी इंक्रीज कला तो माने आफ्टर रे कोन होबा तो जो बर्थ रेट अछि सेटा डिक्लाइन करियो केमती सिंपल बर्तन फूड इंटेक सपोज बढ़ी गला नाउ सपोज पॉपुलेशन थिला 100 से माने कंज्यूम करथले 100 किलो तो पर हेड 1 केजी ऑफ फूड इंटेक थिला वर्तमान पर हेड जदि कंजम्पशन ता 1.5 केजी हे जाय तो केते तांको ग्रेन दरकार हो 150 किलो बट फूड प्रोडक्शन ता बर्तन कांस्टेंट अछि तो ता फल रे कोन हबो बर्तन पॉपुलेशन डिक्लाइन करियो बिकॉज़ नाउ द 100 केजी will not be able to feed the 100 mouth 100 जन को माने खुआइबा पॉसिबल हबो नै किछ जन स्टारवेशन रे डेथ करिवे तो दैट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ओके तो लाइक दैट द फर्स्ट assumption इज देयर सेकंड assumption कोन कहूची material standard कथा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किछि जिंस ऊपर डिपेंड करे जेमति कि माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कैपिटल तो केते आपण पाखरे धन अछि जोडा का आपण यूज करी कि किछि रिसोर्सेस यू कैन बाय यू कैन गेट सम सर्विसेज ओके रिलेटिव टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऊपर डिपेंड करूछि कि सपोज इंडिया में देखुछु कि फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी बट पर हेड कैपिटल माने जे हमें देखुछु माने पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली इट इज वेरी लो. Why it is so? Because the size of the population in India is very high. Okay. Second, productivity of the capital. Suppose you have 100 rupees and I have 100 rupees. How you are utilizing 100 rupees to get some output? So that is the productivity of your capital. जरूरी नहीं जे आपण पाखरे 100 टका अछि मो पाखरे 100 टका अछि आमे दी जन जाक ठीक भाबे ताको यूज करिया पड़े तो से 100 टका केमिति आपण को प्रोडक्टिविटी दोउची माने केमति आपन को आउटपुट्स दोउची केमति आपन को सप्लाईज रिसोर्सेज दोउची बा केमति सर्विसेज प्रोवाइड करची दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल ओके नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने ऑब्वियसली इट्स अ वेरी माने कॉमन देखियो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम जदी कंटीन्यूअसली यूज करिया प्रोडक्शंस पई तो समय सहित से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गुडा को डिक्लाइन कर जिवो डिप्लीट हे जिवो आयरन ओर अछि किबा कोल अछि किबा पेट्रोलियम रिजर्व्स अछि ताको ऑब्वियसली दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी जदी infinite way ताको यूज करिबा एक्सप्लॉइट करिके जीवा इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर गोटे पॉइंट आसे गोटे ये माने एग्जॉस्ट हे जीवो ओके नेक्स्ट होची एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से काहा ऊपर डिपेंड करची कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऊपर डिपेंड करची जदी हम प्रोडक्टिविटी कथा देखिबा जणे माने हळ लंगर रे चाष करची जणे ट्रैक्टर लगि चाष करची जणे हाथ रे धान काटुची जणे से माने तांकर जने कुछ हार्वेस्टिंग टूल्स यूज करची किछि हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स यूज करची तो देखु जोटी मेकानाइजेशन आसुची जोटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ुची से जगह प्रोडक्शंस मते अधिक ओके नेक्स्ट होची जो माने पोल्यूशन जो जनरेट होची तो इट इज आल्सो माने जो पोल्यूशन का जनरेट होची एटा एनवायरनमेंट रे स्टोर होची देख माने एनवायरनमेंट ताको एब्जॉर्ब करची ऑब्वियसली माने पोल्यूशन जोटा माने हम सपोज धुआं एमिट कर देले गाड़ी रो किछि चले कि से धुआंटा तो घर को नहीं आसुने ना तो दैट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट ताको एब्जॉर्ब करची बट एनवायरनमेंट रो मध्ये ऑब्जर्वेशन रो गोटे कैपेसिटी अछि एंति नै जे से जते माने हम से तो कहूचे ना कि जो एयर पोल्यूशन होची बा अदर वाटर पोल्यूशन देखुचे सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन कथा देखुचे सो दैट इज द assumptions तो 5 assumptions हम चलची these 5 assumptions are also related to this 5 parameter जेमते हम देखिले फर्स्ट जो कथा कहले एडा कोन कहूची पॉपुलेशन कथा कहूची सेकंड जोटा देखिले मेटल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कथा कहूची ए जिंस कोन कहूची एडा इंडस्ट्रियल कथा कहूची जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कथा कहूची थर्ड जो देखिबा हमें ए जारे कहूची नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने रिन्यूएबल ए जो पॉइंट कथा कहूची तापर फोर्थ जो देखिबा assumption ता एडा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कथा कहूची दिस इज द एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन और फाइनली हमें देखिए पॉल्यूशन कथा तो all the 5 assumptions are related to the 5 parameter 5 variables जोटा सिस्टम डायनामिक्स थिला ओके इजी टू रिमेंबर कमिंग टू नेक्स्ट तो थ्योरी रे से पांचटा पैरामीटर कथा पुणी कहूची इट्स इररिलेवेंट यू कैन स्किप दिस पॉइंट नॉट रिक्वायर्ड कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल केमते एक्सप्लेन करिवा हम ताको सी मु कोन कहिले कि एज ए ह्यूमन पांचटा का पैरामीटर को एट अ टाइम कंसीडर करके जदि हमें ताको वेरिएशन देखियो चेष्टा करे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस human brain is not capable of processing multiple parameters at a time. So to simplify this, we are going to study only one parameter.
सेटा होय सपोज पॉपुलेशन कथा हम देखिले तो ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो कोन हे परिबा सी यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर कैन बी 4 टाइप ऑफ सिनेरियो माने गोटे सिनेरियो होउची दिस वन दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी तो आर सब हमें ए व्हाटएवर यू आर सीइंग जोटा भी अपन देखु जंती दिस आर द कंप्यूटर सिमुलेशंस तो कंप्यूटर रे किछि सिस्टम किछि हमें इनपुट देलु तार से प्रोसेस करी किछि आउटपुट दबो ग्राफिकल फॉर्मेट रे ओके तो पॉसिबिलिटीज कोन अछि यदि हमें माने विथ द टाइम एक्स एक्सिस ता टाइम को रिप्रेजेंट करछि वाई एक्सिस ता पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करछि समय सहित हमें पॉपुलेशन बढ़ुछि तो पॉपुलेशन ता यदि बढ़िबो केमती टाइप रे एडजस्ट हो समय सहित तो ए जो लाइन ता देखुछंती देयर आर वन फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन इन ईच ग्राफ दैट LC represent the carrying capacity of the region से particular area रो carrying capacity केते carrying capacity अर्थ कोन बुझचंती what is carrying capacity माने मैक्सिमम सेते की रहिबा कथा हां so that is the maximum population that particular माने area can withstand that को अधिक population हबो जदी excess population will die obviously okay तो फर्स्ट सिनेरियो कोन हे पारे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होबो ए पर्टिकुलर पॉइंट विल कम जेतेबेले ना रियलाइज करिवे कि नाउ वी आर रीचिंग आवर कैरिंग कैपेसिटी सेतेबेले पॉपुलेशन निजु को आपे आपे कंट्रोल कर दबो सपोज नाउ विल इफ यू से इंडिया जदी रियलाइज कर जे हम कैरिंग कैपेसिटी हम रीच करि गलुनी इंडिया निजरो बर्थ कंट्रोल कर दबो सच ए वे दैट एटा कैरिंग कैपेसिटी भीतर ही रहि जो दैट कैन बी वन पॉसिबल सॉल्यूशन सेकेंड पॉसिबल सॉल्यूशन कोन ही पारे कि कैरिंग कैपेसिटी को हमें ब्रीच करके आको हमें क्रॉस करके ऊपर को जिबा we have crossed the carrying capacity so once you have crossed the carrying capacity what will happen जो excess population जो देखु this is the excess population that will not be able to get the minimum resources to sustain their life सेमानको फूड मिलिबनी सेमानको मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मिलिबनी मेडिकल फैसिलिटीज मिलिबनी बा अदर सोशल सिक्युरिटीज मिलिबो नाही सो इवेंचुअली दे विल डाई ओके तो फाइनली ए डेथ फलरे जो गोटे कैलेमिटीज आछिबो दैट इज ए मैन मेड कैलेमिटी तो population again it will settle down within the carrying capacity it will fall within the carrying capacity so that is a second scenario third scenario कोन आरो ही गोटे एक्सटेंशन कि जो fall हला परे भी the population has not learned their lesson एबे पर्यंत कोन सी शिक्षा पाइले नहीं पूरी population को बढ़ेले again it has crossed the carrying capacity and again there is a decline okay so this can be third तो आपको हम कहू oscillating way एटा कोन हला ऊपर को क्रॉस कला बट अगेन इट हैज fallen down below the carrying capacity एक केस रे कोन ऑसिलेट करूची इट इज गोइंग एंड कमिंग देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग अगेन इट इज फॉलिंग इट इज लाइक दैट एटा थर्ड केस है पारे फोर्थ सिनेरियो कोन कहूची गोटे पॉइंट रे इंक्रीज कला दिस आर द पॉइंट दे हैव इंक्रीज्ड बट ए जो इंक्रीज हवा फल रे व्हाट दे हैव डन व्हाट द एक्सेस पॉपुलेशन हैज डन से एक्सेस पॉपुलेशन किछि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को कंज्यूम कर देला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस रो अर्थ कोन जेतु हम जे देखु छु बर्तन सिनेरियो रे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होउची पोल्यूशन बढ़ुची आ पोल्यूशन बढ़िया फल रे धीरे धीरे हमर क्लाइमेट जो हम कहू छु ग्लोबल वार्मिंग होउची मे बी ग्लोबल वार्मिंग हे गोटे एम्ति टेंपरेचर आसीबो जो टेंपरेचर फल रे माने जति भी हमर आइस कैप्स अछि तो सेगुडा सब मेल्ट कर जिवो then what will happen कि सी लेवल सच माने गोटे एते लेवल को पहुंचबो जे ऑल दिस जो भी हमरो लो लाइंग लैंड्स गुडा को रहिला बा आइलैंड कंट्रीज गुडा को रहिला दे आर गोइंग टू सबमर्ज्ड कंप्लीटली तो सेही सिनेरियो रे कोन हबो सपोज किछि सबमर्ज हे गेला देन सेही जो लैंड्स गुडा को थिला जो लैंड गुडा किछि पॉपुलेशन एग्जिस्ट करथले से लैंड इटसेल्फ ही सरी गेला ना दैट इज नो मोर एग्जिस्टिंग so you have consumed your some non renewable resources किछि एमती रिसोर्सेस को कंज्यूम कर देले ता फल रे जो कैरिंग कैपेसिटी ता अछि जो कैरिंग कैपेसिटी आथिला दैट कैरिंग कैपेसिटी इटसेल्फ विल गो डाउन so this is the scenario because of the consumption of certain non renewable resources the carrying capacity itself has gone down okay so this is the scenario the last possibility is that it can overshoot the limit and in this process the in the process decreases the ultimate carrying capacity by consuming some necessary non renewable resources okay till this point समझते clear है लास्ट टिके आउथरे हां लास्ट से रही मु कहू छी कि सी वर्तमान पॉपुलेशन इंक्रीज करला तो पॉपुलेशन इंक्रीज करिया फल रे जदि पॉपुलेशन सस्टेन करिया पई जो एक्सेस पॉपुलेशन अछि वर्तमान से माने सस्टेन निजु को सस्टेन करिया पई से माने एम्ति किछि रिसोर्सेस को ही कंज्यूम कर देले जा फल रे
जो क्यारिंग कैपेसिटी टा हमें कहूँ गोटे एरिया रो क्यारिंग कैपेसिटी अछि तो क्यारिंग कैपेसिटी अर्थ कोन माने सेही पर्टिकुलर एरिया रे केते फूड ग्रेन्स मिल परिबो को टाइप रो लिविंग स्टैंडर्ड मिल परिबो ए सब को तो नै कि क्यारिंग कैपेसिटी डिफाइन हे छि ना कि सपोज गोटे सपोज हम छोटो एरिया कथा कहू छी सपोज यू कंसीडर ए रूरल एरिया तो रूरल एरिया रो क्यारिंग कैपेसिटी इज लो कंपेयर्ड टू ए अर्बन एरिया काहे कि व्हाई इट इज सो अर्बन एरिया रे बहुत फैसिलिटी अछि बिकॉज़ हॉस्पिटल रोड because those basic amenities जो भी आपन फूड हो कि मेडिकल फैसिलिटीज हो अदर जो भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अछि that is more in the urban area compared to the rural areas मौलिक सुविधा गुडी को मिल जाउते है सिंपल से कथा तो जदि एमती किछि सपोज गोटे पॉपुलेशन इंक्रीज हला जो फल रे से माने से जो मौलिक सुविधा प्रोवाइड करूथबा सिस्टम गुडा को ही कंज्यूम करी गले बर्तन So what will happen? Eventually the carrying capacity of the system itself, the area itself, it will brought down, it will go down. डिक्रीज हे जीवो ता फल रे कोन हबो कि कैरिंग कैपेसिटी ही जदी कमी गला जदी आगु प्रथम ऊपर केस गुडा कोन होता जतले से तळु को खसुथिला जतले ग्राफटा तो से को ए पाखरे पुणी ताको कैरिंग कैपेसिटी सेति की हिथिला दे आर अलाइनिंग हियर बर्तन जदी कैरिंग कैपेसिटी ही जदी तळु खसी गला देन ऑब्वियसली पॉपुलेशन विल डिक्रीज इन ए ड्रास्टिक मैनर एंड दे हैव टू अलाइन हियर बुझी परले यस सर yes sir यस सर thank you ओके कमिंग टू से जो जिंसटा हमें बर्तन देखिले मुझे तो कहले कि दिस इज जस्ट वी हैव टेकन वन वेरिएबल पॉपुलेशन को कहि कि नाउ जस्ट टू समराइज all the things जो भी हमें different variables we have talked about the 5 variables would be there तो over the period of time तो what was the expectation for the all the 5 variables माने हम जो पांचटा वेरिएबल रहिला तो होची रिसोर्सेस नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन दिस इज 3 नेक्स्ट इज द पॉल्यूशन ओके 4 तापरे आ गोटे रहिला जो हम कहउचंदी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिस इज योर फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन resources material जो कथा कहउछ material this they have not given over here because material ता कोन हबो सब बोले material is like this only material सॉल्व करियो ग्राफ ता द जेतु एटी रिसोर्सेस गोटे पॉइंट रे एग्जॉस्ट हे जिवो तो सही जगह रे एंती ही फॉलो करियो जो फर्स्ट ग्राफ ता में करथले इट विल बी लाइक दिस ओके तो एटा एक्सपेक्टेड टू बी 2100 माने नेक्स्ट 100 years okay this is your 2000 and this is your 2100 by 2100 all the resources will be it will be exploited completely they will experience a drastic fall in the production okay so that will be the graph of this industrial production apart from that them dekhiba resources so simple kotha resources is it's declining over the period of time और major decline केबे हम देखुछु माने between 2000 to 2100 ए भितर major decline हम देखिबा resources तो मेजर हमें देखिया इट्स द टोटल माने एक्स एक्सिस तो देखोची ओरिजिन ऑफ माने मैनकाइंड टिल 2100 तो मेजर कंसीडरेशन कोन अछि 2000 रु 2100 ए जो 100 ईयर दैट इज द मेन एक्सप्लॉइटेशन एंड मेन जो हमें कहूछु माने ड्रास्टिक डिक्रीज जो जिंसो देखोची जो ड्रास्टिक एक्टिविटीज होची दैट इज ओवर दिस 100 इयर्स ऑफ पीरियड ओके तो रिसोर्सेस कथा देखिले जदि हमें पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन कथा देखिबा तो पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन अप टू 20 माने 2000 पर्यंत एग्जैक्टली ओवरलैपिंग वे रे चलथि बट फ्रॉम 2000 टू 2100 पॉपुलेशन का बढ़ी जाउची दिस p लाइन दिस p इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन वेयर f इज रिप्रेजेंटिंग द फूड तो पॉपुलेशन इज मोर एंड फूड इज नॉट एडिक्वेट माने फूड इज नॉट एट पार विद द पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट ओके coming to the pollution level obviously pollution we know it is increasing over the period of time especially a particular way a particular area रे हमें जो भी increase ता देखु छो that will have a drastic impact on the environment जो भी हमें ice cap melting हला किबा जो uncontrolled way रे जो माने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रो लेवल हमें देखु छो environment रे air pollution water pollution all sort of pollutions and the negative impact on both on the health warming yes that is the part of your pollution okay तो ए जिंसटा व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ए जिंसटा आईडिया आपनकर माने एक्सप्लेनेशन जो लिखाई छी यू कैन गो टू दैट तो कमिंग टू द क्रिटिसिज्म दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन कमिंग टू द क्रिटिसिज्म कोन थिला सी ए जो ऑब्वियसली प्रथम रो हम डिस्कस करथले जे एटी क्रिटिसिज्म ओवर द 20 इयर्स से माने एक्सपेरियंस कले ता फले निज थ्योरी को ही से माने चेंज करले व्हाट दे हैव टोल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स
कहीं की बिकॉज प्रथम कथा होची ये जो किछि माने प्रेडिक्शंस करथिले द प्रेडिक्टेड लाइक द वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जो 2100 रे से 2100 रो टाइम पीरियड को से मान केमति जानले हाउ इट विल बी 2100 मे बी 2090 रे ही परथांता बट 2150 रे ही परथांता तो दैट वाज अ वेरी यू कैन से इट्स माने गोटे टाइप रो लैब रे बसी तमे डिसाइड करछो यू हैव नेग्लेक्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स ओके इट does not account for a infinite possibilities ये जो कहूची बारंबार it is does not account for the infinite possibilities of the human invention जेमते हमें कहूचु Israel by default Israel is a country where it is not suitable for the agri productions but as the date Israel is self sufficient in the agri production even they are exporting certain agri productions how it was so because of the innovations जेमते देखुछु जापान रे होची माने तांको पाखरे रिसोर्सेस माने जो मटेरियल रिसोर्सेस आर वेरी लेस माने जो भी iron ore ho core ho coal ho these are not available in Japan but Japan is a industrially what you can say it's a developed country how it was there highly developed हाँ तो केमती possible है ये सब जिनिस because of the technological innovation तो innovation होची technology तापर transportation body पड़ुची they have माने such a production chain so that with the minimum cost माने इतने सब जिनिस import कला परे भी with the minimum cost they are able to sustain their economy because of the development and the innovations okay so that was there it was neglected ए जिनिस को neglect करा हेतला तापर रे एटा गोटे सिमुलेशन ही कहूचे आ जो ए जो सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड रे माने जो एग्जैक्ट वर्ल्ड रे जो जिंसटा हैपन होची दे हैव नेग्लेक्टेड ऑल दोस थिंग्स जेमति किछि जिंस से कंसीडर करथि जेमति कि स्टैटिक रिजर्व इंडेक्स होजन से स्टैटिक रिजर्व इंडेक्स माने जो रिसोर्सेस गुडा को स्टैटिक अछि जो गुडा को एग्जॉस्ट करि ही जीवो इट्स अ क्रिटिसिज्म बिकॉज़ 2100 रे एग्जॉस्ट करियो हाउ यू केम टू नो ओके नेक्स्ट होची टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यदि टेक्नोलॉजी डेवलप होची देन रिसोर्स रो एक्सप्लॉयटेशंस मध्ये बढ़ी पड़छ माने रिसोर्स को बेटर वे रे आपण यूज करि पड़छन सपोज एबे सेल ऑयल कथा कहबे सेल ऑयल जनरली एते माने पॉपुलर नथिला माने तार एक्सट्रैक्शंस वाज कॉस्टलियर नाउ इट इज it's trending even जो भी अफ्रीकन कंट्रीज गुडा करे बा किछि एमटी एरिया रे जोटी किछि मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करिया इट वाज वेरी माने कॉस्टली अफेयर थिला टेक्नोलॉजी डेवलप हो पड़े सेटा हम करि परछु ओके नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन कथा तो फूड प्रोडक्शंस मध्ये जेमते हमें ग्रीन रेवोल्यूशंस कथा देखुचे तो ग्रीन रेवोल्यूशन जेतोला आसिला तो इंडिया रो जो फूड प्रोडक्शन रो लिमिट था वी हैव इंक्रीज दैट वन सो हाउ यू आर गोइंग टू टेल लाइक 20000 माने 2 हमें जो देखिले 2021 भितरे फूड प्रोडक्शन का डिक्लाइन कर जाउछ कंपेयर टू द पॉपुलेशन इंक्रीज तो इट्स ऑब्वियसली इट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग जे देखिया 2000 परठू जे देखिबे पॉपुलेशन हैज माने पॉपुलेशन इंक्रीज ता कमी छि इंडिया कंट्रोल करछि चाइना कंट्रोल करछि निजे पॉपुलेशन को दीज आर द मेजर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज बट फूड प्रोडक्शन तो बढ़ी छि ना बिकॉज़ द प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज हां ए जिंस ठीक मानुछि जे द लैंड अंडर द कल्टीवेशन जते जगह रे हमें कल्टीवेशन करथु से लैंड ता बर्तन डिक्रीज करछि बट द टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड तापर पॉपुलेशन ग्रोथ होता कहबा पॉपुलेशन ग्रोथ से माने लिमिट्स टू ग्रोथ कोन प्रेडिक्ट करथला कि 2000 सुधा हमर 7 बिलियन पॉपुलेशन हे जिवो और 2030 सुधा 14.4 बिलियन पॉपुलेशन हे जिवो दिस इज नॉट ट्रू 2000 रे ही 6 बिलियन पॉपुलेशन थिला आज डेट रे देखिए इट इज रफली अराउंड 7 बिलियन वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टुवर्ड्स 2030 इंडिया हला चाइना हला से पॉपुलेशन कंट्रोल करि सारलेने ऑलमोस्ट ओके नेक्स्ट होची पॉल्यूशन कथा तो पॉल्यूशन रो जो भी जे देखिया माने पॉल्यूशन ऑब्वियसली पॉल्यूशन इज समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग बट लिमिट्स टू ग्रोथ कोन कहितला पॉल्यूशन को कम करिया को हेले माने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जीरो कर द्वारा दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग सी यदि इंडिया निजर यदि पॉल्यूशन को कम करिया कर अछि तो कोन कहि इथेनॉल ब्लेंडिंग करि परिबो रिन्यूएबल एनर्जी को इन्वेस्ट करिवो माने किछि हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज करिवो किबा ईवी व्हीकल्स को यूज करिवो तो ए सब जिंस पे इन्वेस्टमेंट दरकार सब्सिडीज दरकार तो ए सब जिंस केमति आसीबो यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी जे जीरो कर देले तो हाउ यू आर गेटिंग योर मनी सो दैट यू कैन प्रोपेल ऑल दिस माने इनोवेटिव इनिशिएटिव्स दिस इज नॉट पॉसिबल ओके सो दैट इज आल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस नेक्स्ट होची जो प्राइस सिस्टम कथा कहूचे तो प्राइस सिस्टम होची ये नेग्लेक्ट कर देतला जो प्राइस सिस्टम माने मार्केट रो प्राइस सिस्टम कथाटा माने सिंपल जिंस बुझंतु सपोज एबे 100 किलो मार्केट रे अवेलेबल अछि तो तार प्राइस जहा रहिबो जति नै कि वर्तमान से जिंसटा 90 किलो अवेलेबल हबो तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ी जिवो जदि किछि जिंस आपण कॉस्टली वर्तमान किउचंती देन तार यूटिलाइजेशन भी जुडिशियस हे जिवो केबे भाबिचन जतले पेट्रोल दाम ता बढ़ी जाउची व्हेन इट इज गोइंग वे बियॉन्ड देन से तोलना हमें भाबिए नहीं यार पाखु जाउचे काहे कि बेकार हमें बाइक नै कि थाओ
मे बी आगुरी जो चीप थिला यू आर एक्सप्लोइटिंग मोर तो प्राइस गोटे एमती जिंस दैट इज आल्सो रेगुलेटिंग द ह्यूमन बिहेवियर ओके नेक्स्ट इज द नेट इकोनॉमी नेट जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ जोटा हमें डिस्कस कले कि लिमिट्स टू ग्रोथ कहूँ जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ हेले ही हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल कर परिया बा अदर जो भी एमिशंस को बा रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशंस को हमें कम कर परिया बट दिस इज नॉट ट्रू इकोनॉमिक माने जो डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड यदि हमें इकोनॉमी को यदि जीरो कर देबा then 2100 नहीं maybe 2050 सुधा ही total population decline करे जिवे because we'll not get money to sustain our life तो lifestyle maintain ही परिवनी standard of living decline हबो medical facilities आसी परिवनी and other sort of problems will encounter okay so this is all about your criticism coming to the implications finally एक सब criticism हला एक सब problem हला तो ए theory किछि हमको देला ना दिलानी तो obviously it has given some माने जो क्वेश्चन हमको देला क्वेश्चन कौन कहूची कि relentless pursuit for the जदि हम जिन सब कहबा it has highlighted the dangers that was posed by the relentless pursuit of the material wealth by the developed countries तो developed countries जदि माने हमें कौन कहबा unrational way रे जदि irrational way रे जदि exploit करिया बुझिबे all the resources the time will come if not this 2100 maybe 2300 सुधा this situation may encounter okay तो ये कौन करछि माने जो भी हमरो माने पॉलिसी मेकर्स रहिले गवर्नमेंट रहिला एनजीओस हला पीपल्स हला ए मानु को अवेयर करछि व्हाट शुड बी द कॉशन व्हाट शुड बी द माने जो कोन कि प्रोटेक्टिव स्टेप वी शुड टेक सो as this type of situation will not appear in the near future okay तो जेमति कि गवर्नमेंट जो नेट जीरो पॉलिसी को अडॉप्ट करिया दरकार तो दोज आर सर्टेन थिंग्स that are the takeaways from this limits to growth even जो हमें कहू जे जो this one we have just देखिथिले कि beyond the limits तो beyond the limits रो एग्जांपल कोन ही परिबो माने beyond the limits कहया बोले आज डेट रे इंडिया रे मध्ये beyond the limits देखुचे तो beyond the limits कोन कहूची सिंपल कथा कि इट्स क्वेश्चन करूची कि तमे जदी माने जो भी माने जदी कि someone is doing a negative thing to the environment suppose someone is polluting then जो हमें फंडामेंट्स को polluters pay principle so that is something कि जदी जने नेगेटिव जिंसो करूची then they have to penalize whereas जदी पॉजिटिव जिंसो करूची जने जदी environment friendly जिंसो करूची they has to be incentivized तो तार अर्थ कोन जेन हम कहू polluters pay someone is polluting they have to pay the price as a compensation जेमते हम कहू कांपा फंड कथा भी देखिथिबे compensatory afforestation कथा किबा polluters pay principle whereas जदि हमें incentivizations कथा देखिबा जदि आपण when if you are going to buy an EV vehicle what is considered to be climate friendly then you are incentivized जो FAME mission कथा काली देखुथिले हमें you are getting subsidies so that is a incentivizations government is encouraging you so as you should माने proceed in that direction okay so that will be the conclusion of जो हमें कहू beyond the limits caution दोछ it's not giving any जो को ना कि it's not giving a deadline it's giving just a caution or it is making you aware of the danger that may appear if you are going for a irrational use of the resources okay clear about all okay so this we have done next होची हमरो world agricultural typology and agricultural reasons और रहिला हम von Thunen theory of agriculture location so first we'll complete this von Thunen theory then we'll go to the agriculture typology okay एटा chances अछि एथरा आसीबारो because they used to ask either माने सेमती इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज a very important chapter तो से माने कोन करंती दीटा theory अछि गोटे होछि एग्री लोकेशन theory और होछि इंडस्ट्रियल लोकेशन theory तो अल्टरनेट ईयर रे पचेर थाइछंती एथरो जेहेतु ऑलरेडी स्मिथ आसी साथिला so we can expect von Thunen is a potential question for this year examination okay so it's 10 minutes left so we can't go to that so let's do one thing we'll go for some mapping diction we'll start with Australia is it visible Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है so what will happen कि सर कौन टिके जूम करिवे Article माने visibility properly हो जूम हला yes sir now clear सर जो पढ़ेले लिमिट टू ग्रोथ रे
ଆମେ जो मनकर एटा सर जो एबे जो क्वेश्चन टा देखौतले एथरे भी लिमिट टू ग्रोथ पड़ीथिला एटा सर केते मार्क करे पड़ीथिला 20 मार्क रे पड़थिला। एमती टाइप रे हम एक्सप्लेन करिवु जदी पड़िबो भी हाँ जेमती आपन कहले हाँ हाँ आपको माने व्हाट इज इतनी लिमिट टू डिटेल ग्रोथ करिबेनी। हाँ इतनी डिटेल करिबेनी। You have ग्राफ to गुड़ा convert your answer into 2.5 pages, 3 pages. 3 pages भी बहुत ही होती है, 2.5 pages will be सर sufficient. ग्राफ गुड़ा शो करया पड़ियो ना। हाँ सर ग्राफ पे अधिक हाँ सर 2.5 ग्राफ pages कौन यस सर सर जो ग्राफ गुड़ा को केवल ग्राफ करके सेठी टिके टिके एक्सप्लेन कर देल हाँ हबन हाँ हाँ माने ऊपर टिके इंट्रोडक्शन दे देले तापरे जो लिमिट्स टू ग्रोथ रो जो हम को पांचटा वेरिएबल्स अछि से विषय लिखि देले जो assumption जदी लिखिबे 5 पॉइंट्स पे यू नो नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो पांचटा लाइन ऑफ assumption अछि दैट यू जो बोल्ड लेटर अछि दैट यू कैन राइट देन यू कैन गो टू द ग्राफ जस्ट एक्सप्लेन एंड कवर इट। सर इंट्रोडक्शन है सेटा हिस्टोरिकल हाँ इवोल्यूशन दा जो गले सेटा करबा बेसी लिखिया दरकार है। हाँ से जो मु आपन तीनटा पॉइंट करे 1968 रे फर्स्ट ओडे फॉर्मेशन हला क्लब ऑफ होम रो तापरे माने 72 हाँ 1970 1992 92 हाँ सर हाँ सर। तापरे 92 रे केमती माने बियॉन्ड ग्रोथ जो कथा कुछ तापरे पैरामीटर पर एजम्पशन यस ठीक अछि। हाँ सर ओके तो विल गो टू मैपिंग आगु देखि देबा टिके सी ऑस्ट्रेलिया को जे देखिबे ऑस्ट्रेलिया को कोन छै एंड में माने इंडिया रो जो स्टेट्स अछि ऑस्ट्रेलिया कोन इट्स अ कॉन्टिनेंट भी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जतलो कॉन्टिनेंट आपन कंसीडर करजो नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया सहित न्यूजीलैंड भी आसे ओके बट कमिंग टू द ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ तो ऑस्ट्रेलिया कोन जेमते हमरो माने स्टेट्स अछि तांकर सेमति टेरिटरीज अछि तो कोन टेरिटरीज अछि तांकर जो स्टेट्स कहि परिए टू माने इन अ वेरी लेमन वर्ड गोटे होछि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ए जो पोर्शन देखुछन दिस इज डिवाइडेड दिस इज कंप्लीटली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तापर नॉर्दर्न टेरिटरी गोटे अछि सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया ओके आकु छाडला पर गोटे आइलैंड अछि जेंते हम पोर्ट माने अंडमान निकोबार आ लक्षद्वीप अछि दैट इज कॉल्ड तस्मानिया ओके तो एति के होछि ऑस्ट्रेलिया रो तो जो माने टेरिटरी गुडा को देखले एक्सेप्ट दिस नॉर्दर्न टेरिटरी द नॉर्दर्न टेरिटरी जनरली तांकर ट्राइब्स जो ऑस्ट्रेलियन जो तांकर मेन जो तांकर माने दो मेन ऑस्ट्रेलियंस जो हम कहू दे आर रिजाइडिंग द ट्राइबल्स यू कैन फाइंड इन द नॉर्दर्न टेरिटरी रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जे देखिबे ऑस्ट्रेलिया रे सेटलमेंट्स इज ऑन द कोस्ट केवल कोस्ट रे ही सेटलमेंट्स अछि आउ किछि इंटीरियर सेटलमेंट्स नाही व्हाई बिकॉज़ the interior part of this Australia is completely desert a maximum माने you'll see तो deserts अछि तो सेतमे केवल ए पोर्ट सिटी गुडा कर ही सेटलमेंट देखा मिलु छी एनी हाउ दिस पोर्ट सिटी इज सेटल्ड बाय यूरोपियंस तो जो अमेरिकन्स और यूरोपियंस रहिले दे हैव माइग्रेटेड इट्स लाइक ए पनिशमेंट फॉर देम से समय तांको पय पनिशमेंट कंसीडर करा होतला एंड नाउ दे हैव माने दे आर द डोमिनेटिंग माने रेस in this माने कंट्री ओके तो हमर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू विल सी फर्स्ट हमें वाटर बॉडीज किछि देखिबा तो फर्स्ट ए गोटे ऑस्ट्रेलिया रो ईस्ट साइड रे गोटे लॉन्ग रीफ गोटे अछि जोटा कि कोरल रीफ ता सेटा दैट इज बहुत फेमस एवरीवन नोज अबाउट दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ ओके इट इज अ बैरियर कोरल रो टाइप्स अछि दैट विल स्टडी इट इज कॉल्ड ग्रेट बैरियर रीफ जोटा कि ऑस्ट्रेलिया रो ईस्टर्न साइड रे एलोंगेट हेछि अछि ओके तो सेही पाखरे जो वाटर बॉडी ता अछि इट इज ए मार्जिनल वाटर बॉडी ऑफ पैसिफिक ओशन ताको हमें कुछ कोरल सी ओके ताको छाडला परे आउ कोन सी अछि ऊपरे आउ गोटे कंट्री अछि दिस इज वन कंट्री दिस कंट्री इज कॉल्ड पपुआ न्यू गिनी आ पपुआ न्यू गिनी आउ ऑस्ट्रेलिया भीतर गोटे छोटो स्टेट अछि वाटर बॉडी गोटे अछि दैट स्टेट इज कॉल्ड टोरेस स्टेट ओके दिस इज टोरेस स्टेट तापरे आउ गोटे एडी वाटर बॉडी अछि नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया रे दैट इज कॉल्ड आराफुरा सी इट इज आराफुरा सी आउ जदी देखिबे देयर आर टू गल्फ माने ऑप साइड रे नॉर्दर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया देयर आर टू गल्फ देटा गल्फ अछि गोटे अछि गल्फ ऑफ कार्पेंटेनिया आउ अछि गल्फ ऑफ माने जोसेफ बोनापार्ट ओके दिस आर टू गल्फ्स तापरे जो आराफुरा सी लेफ्ट साइड देखिबे जे दिस इज टिमोर सी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रो पार्ट ओके वेरास जदी हमें कोरल सी को देखिबा इट इज ए पार्ट ऑफ योर पैसिफिक ओशन इवन आराफुरा सी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ओके क्योंकि ए पार्ट रो आगु को जोडा रहिला दैट इज पैसिफिक आउ ए पार्ट रो ऑस्ट्रेलिया रो एपोर्ट साइड जो जिनसटा रहिला दैट इज टुवर्ड्स दिस साइड दिस इज योर इंडियन ओशन ओके नेक्स्ट कमिंग टू दिस साइड जे हमें तळे देखिबा दिस इज योर तस्मान और तस्मान आउ ऑस्ट्रेलिया भीतर माने तस्मान आइलैंड आउ ऑस्ट्रेलिया भीतर जो
गोटे स्टेट अछि दैट इज कॉल्ड बास स्टेट ओके और जेहेतु ए बास स्टेट ए वाटर बॉडी टाको तस्मान सी भी कहंती ओके नेक्स्ट तळे जे देखिबा एटी गोटे गल्फ अछि ऊपर दीटा गल्फ देखिले गल्फ ऑफ कार्पेंटेनिया आउ जो गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट तळे गोटे गल्फ अछि ताको कहंती गल्फ ऑफ स्पेंसर दिस इज अ गल्फ ऑफ स्पेंसर जस्ट बिसाइड योर एडिलेट एडिलेट समस्त जदी जो माने क्रिकेट देखंती दे माने मस्ट हैव एक्वेंटेड विथ दिस नेम्स एडिलेट सिडली ब्रिस्बेन तो ए सब गुडा को केबे केबे देखिथिबे ओके तो नेक्स्ट ए जदी तळे देखिबे जेमती एप्पल प्रोडक्ट देखिथिबे एप्पल रे गोटे जो कट थाउची बाइट थाउची से हिसाब रे गोटे एप्पल रो बाइट टाइप रो एडी अछि ऑस्ट्रेलिया रो तळे साइड रे तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट अब ऑस्ट्रेलिया रो जो माने नॉर्थ वेस्ट साइड रे जदी सॉरी साउथ वेस्ट साइड रे जे देखिबे तारा स्मॉल छोटो 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 किछि आर्किपेलागो अछि आर्किपेलागो माने स्मॉल आइलैंड रो ग्रुप को आर्किपेलागो कहंती दैट इज द आर्किपेलागो ऑफ रेंचर दैट इज द आर्किपेलागो ऑफ रेंचर in the southwest of Australia. It's in the water body. Okay. तापरे एपट साइड रे जदि वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखिबे there is a channel so that channel is called माने गेल्विन चैनल ओके गेल्विक चैनल तापरे आउ ता ऊपर साइड रे गोटे छोटो पॉइंट अछि दैट इज कॉल्ड शार्क पे काहे कि जनरली शार्क पॉपुलेशन सेठी बहुत होते देखते दैट इज कॉल्ड शार्क पे इट इज हियर ओके ताको छडला परे हमें कोन देखिया देयर आर जो हमें कहले किछि इंपोर्टेंट सिटीज गुडा को जोछि पोर्ट सिटीज गुडा दैट वी हैव टू रिमेंबर कमिंग टू दिस इज कॉल्ड ब्रिस्बेन जोटा कि क्वींसलैंड रो मेन जो सिटी होछि दैट इज ब्रिस्बेन तळु को गोटे पोर्ट अछि दैट इज पोर्ट सिटी दैट इज कॉल्ड गोल्ड कोस्ट काहे कि माने इंपोर्टेंट थिला सम 2-3 इयर्स बैक जो कॉमनवेल्थ गेम दैट इज गोल्ड तापरे नेक्स्ट यदि देखिए न्यू साउथ वेल्स रो मेन सिटी होछि सिडनी और तापे टिके भितु को जे देखिए दिस इज नॉट एक्जेक्टली पोर्ट सिटी इज अ लिटिल इंटीरियर दैट इज कॉल्ड कैनबेरा इज द ओवरऑल कैपिटल ऑफ योर ऑस्ट्रेलिया तो एडा भी 2019 रे आई गेस पचर थिला कैनबेरा रो माने लोकेशन टा तापरे 2019 ही पचर था हां तो तापरे विक्टोरिया जो रहला विक्टोरिया रो मेन सिटी होची एडा होची मेलबर्न तापरे रहला साउथ ऑस्ट्रेलिया रो इंपोर्टेंट सिटी होची एडिलेड आ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रो इंपोर्टेंट सिटी होची पर्थ तस्मान रो जो तार कैपिटल सिटी जो रहिला सेटा होची होबोर्ट और फाइनली नॉर्दर्न टेरिटरी जो अछि तार इंपोर्टेंट सिटी होची डार्विन ओके तो को केमति मन रखि परिवे बीएससी एमए पीएचडी करी केमति मन रखि परिवे स्टार्टिंग विथ दिस माने ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट नाही ऑब्वियसली से ये रे डिस्ट्रिक्ट तो ब्रिस्बेन बी स्टैंड्स फॉर ब्रिस्बेन एस स्टैंड फॉर सिडनी तापरे सी स्टैंड फॉर कैनबेरा देन एम होची दिस इज मेलबोर्न देन ए होची एडिलेड देन पीएच जो होची पी टा होची पर्थ एच रे होची होबोर्ट एटी टिके चेंज हे जाय बिकॉज़ दिस इज होबोर्ट यू हैव टू कम दिस वे और फाइनली डी स्टैंड्स फॉर दिस डार्विन ओके अगेन रिमेंबर दिस वे और जेंति मन रखुछन सेंति मन रखि करंती ओके हां नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन एडे कि हमें फिजिकल लोकेशंस हमें देखिबा तो ऑस्ट्रेलिया रो ईस्टर्न साइड रे गोटे लॉन्ग माउंटेन रेंज अछि जोटा हमें कहूछु ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और एडा ही मेन रीजन जा फल रे ऑस्ट्रेलिया रे डेजर्ट देखा को मिलुची तो हमें जो पढ़ी थिले सॉरी वी हैव नॉट डेल्ट यदि इफ यू नो अबाउट दिस विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड तो ए जनरली कोन करे एडा विंडवर्ड साइड फॉर्मेशन करे एडा लीवर्ड साइड हे जाय बिकॉज़ ऑफ दिस लीवर्ड साइड दैट इज अ डेजर्ट फॉर्मेशन ओवर हियर ओके तापरे नेक्स्ट सेटू जदी हमें देखिबा तो गोटे रिवर बाहरची इट इज अ डार्लिंग रिवर आ गोटे तळे गोटे रिवर अछि दैट इज अ मूरे रिवर तो मूरे रिवर और डार्लिंग रिवर दीटा मिसे की एडी माने ड्रेन करंती एडिलेड पाखापाखी से माने ड्रेन करंती ओके नेक्स्ट हाउ कोन रहला एडी हां एडी जो रेड कलर रे देखु जदी दिस इज वन अनदर माउंटेन इज देयर कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हां कोन हां सर ऑस्ट्रेलिया सर ईस्टर्न साइड सर डेजर्ट सर ने वेस्टर्न थाई ना सर ईस्टर्न साइड थाई सर वेस्टर्न साइड था डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया रो वेस्टर्न साइड रे भी अछि तबे इवन आपन को ईस्टर्न साइड रे अछि यू विल जस्ट सी दीस आर द डेजर्ट्स ग्रेट सैंडी डेजर्ट ग्रेट गिब्सन डेजर्ट देन ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट देन तनामी डेजर्ट सिम्पसन डेजर्ट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन एटा भी गोटे आपन को इट्स अ ड्राई लैंड ओके तो देयर आर लॉट ऑफ ड्राई लैंड्स ओवर हियर सर ईस्टर्न साइड सर रोच डेजर्ट सर त रीजन टा कोन पे रोच कहली ना कि देखंतु फॉर सेंस होची एज पर इट इज ए वार्म करंट फ्लो करछि तो वार्म करंट फ्लो कल तो वर्षा हवा कथा सब बोले किंतु ए एरिया रे गोटे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अछि दैट इज कंप्लीटली इट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो गोटे जेतले रेंज अछि इट इज ए कंटीन्यूअस चेन दैट इज
माने ये ऑब्स्ट्रक्ट करूची द विंड सिस्टम टू कम इनसाइड बुझ परछन ना तो Yes, sir. leeward side और Leeward windward side side formation करूची that's why you can experience lot of desert over here और ए जगह रे जो desert देखा it is simply explained because there is a cold current over here तो cold current जो Okay, sir. एरिया तो desert हबनी हबो ठीक अछि Okay, sir. Thank you. हां କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ କୋଉ ଜାଗାଟା କହିଲେ हमें करंट देखिबा just for the time being you remember east side रे गोटे warm current अछि west side रे गोटे cold current अछि cold current all the current system will discuss in general एति की खाली मन रखंतु टाइम बिंग कि ईस्ट साइड रे ऑस्ट्रेलिया रो इट्स ए वार्म करंट वेस्ट साइड रे इट इज ए कोल्ड करंट ओके एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दिस वन तो एदिटा हमें देखिले तळे जो रेड कलर मार्किंग हे छे दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ओके तापरे नेक्स्ट होची हां किछि माउंटेन रेंजेस अछि दैट विल सी एडी गोटे माउंटेन अछि इट इज कॉल्ड माने फिंडर्स रेंज नेक्स्ट होची ए पाखरे गोटे अछि रेंज एडा होची डार्लिंग रेंज do not confuse this is your darling river this is your darling range east or west is situate अछि तो you should not confuse about that okay next dita आउ देखिबा गोटे होची हामर्सली रेंज आ गोटे होची चेचिस्टर रेंज तो चेचिस्टर ता ऊपर हामर्सली ता तळे ताकू छडला परे एडी अछि मैकडोनल्ड रेंज आ मुसग्रेव रेंज ओके और फाइनली दिस इज ए ग्रे रेंज तो these are certain जो रेंज उडा माने माउंटेन्स गोटे हमें देखिले ग्रे रेंज there is a Australian Alps तापर रहितला एडी डार्लिंग रेंज दिस इज अ हामर्सले चेचेस्टर रेंज दिस इज अ मैकडोनल्ड रेंज मुसग्रेव रेंज और ग्रे रेंज ओके तापर मु जो डेजर्ट्स गुडा को तो कहि देतली ओवरली दिस इज योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिस इज योर गिब्सन डेजर्ट और एडा होची ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आको 3G डेजर्ट कोते जी अछि ना ग्रेट गिब्सन ग्रेट तो दिस इज 3G डेजर्ट ओके तापरे ताकू छाडला परे एडी दिस इज तनामी डेजर्ट दिस इज अ सिम्पसन डेजर्ट और एडी गोटे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन अछि इट इज आल्सो ए ड्राई लैंड ओके तापरे एडी गोटे लेक अछि इट इज कॉल्ड लेक आईरी ओके दिस इज लेक आईरी तो आउ ए लेक आईरी बहुत तळु को अछि आईरी पेनिनसुला इट्स डू नॉट कंफ्यूज दिस इज लेक आईरी एंड दिस इज आईरी पेनिनसुला टा कोउटे अछि दिस इज जस्ट अहेड ऑफ योर जो स्पेंसर गल्फ देखथिले तार ऊपर ए पाखरे अछि आईरी पेनिनसुला ओके so next how कौन छाडलु से को एडा इज इंपोर्टेंट नहीं आगु एमती क्वेश्चन आस्ला माने कोडा माने दिस इज फेमस फॉर योर कोल एंड व्हीट ओके एडा गोटे खाली देखि दियंतु यू हैव टू रिमेंबर दिस जदि किम्बरली के भी सुनते किम्बरली डायमंड इज फेमस तो दिस डायमंड यू कैन फाइंड डायमंड ओवर हियर दैट इज किम्बरली डायमंड ओके आउ तो किछि नहीं दिस मच इज इंपोर्टेंट हां आउ गोटे एडी अछि Carlgorite okay this is a point where gold is found that much is important आउ किछ ने हां ए जो गोटे इरेक्टेड पार्ट ता रहला ना को अहम लैंड कहते ओके एटा आउ आईरी पेनिनसुला ए जो दीटा पॉइंट देखले नॉर्थ और साउथ रे आईरी पेनिनसुला एकदम साउथ रे नॉर्थ रे अहम लैंड अछि ए दीटा कोन यूरेनियम रिजर्व ए जनरल ओके तो दिस मच तो हमें ऑलरेडी टाइम इज देयर तो हमें विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास किम्बरली प्लेच्यूडर सर किम्बरली टा कोन कहथिले प्लेच्यूडर हां इट्स ए नेचुरल डायमंड